Hello students, today we are going to start classification of elements and periodicity in properties. Okay, as you are class 11th students, you already have read something about this chapter in your class 10th. Okay, and even I would like to say if you have done this chapter in your class 10th well, okay, then you need not to do much in this chapter. Okay, so it is going to be a very easy chapter for you in both the scenario you have done your class 10th well or not. You all must have been very familiar with the periodic table. Okay, there are 118 elements in the periodic table, and how they are arranged in a periodic table, there's a particular fashion of writing the elements on the basis of their properties, and what sort of trends we are going to see in their properties when we are going down the group or along the table along the period. These all things we are going to study in this chapter. Okay, so we can say we are going to study periodic table as a whole. One additional information I would like to share you with all of you, that year 2019 was the periodic table year declared by UN. Okay, why? Because that was the 150th anniversary of the periodic table, right, which was given by Mendeleev in 1969. All right, so in the June 2019, there is a magazine, Yojana. That magazine was completely based on the periodic table. And from that magazine only, I came to know about the uh, future of periodic table. So there is high chance that we will get our elements or our periodic table that can be extended. There are great possibilities. Actually, we all know that out of 118 elements, today we are having 118 elements in our periodic table. And out of these 118, only 92 are naturally occurring. Other all are made artificially in the laboratories. Okay. So scientists are continuously trying to form the new elements. Okay. And there is high chance that within 1 year or perhaps they must have achieved it by now. Okay, the atomic number 118, 19 and 120 will be formed very soon. Some scientists even think that they can form the elements up to the atomic number, or in future we'll get the elements up to atomic number 173, 174 even. Okay, but atomic number 119, 20, 21 and 22 are quite common, and soon we'll get them. Other thing, we will also study about the nomenclature of the elements in this chapter, because the reasons also we will take then and there only. As you have already read about the nomenclature of the organic compounds, so there is now we are also having the criteria for naming the elements which are having the atomic number more than 100. Okay, so you'll see that also. Let's begin with the quotation by Glenn T. Seaborg. Yeah, students, see, when you are studying the science, especially chemistry, I would like to discuss the things with you in such a way so that your vision of studying science and your vision about the science must be changed. See, learning the facts is not science. Knowing the facts is not science. As learning the dictionary is not your literature. Okay? If you have learned the dictionary, you don't know literature. In the very similar way, you may look knowledgeable. You may look a person who knew English or knew literature, but you actually don't know literature by just learning the dictionary. In the very similar way, by just knowing about the facts, you don't know anything about the science. So sometimes these quotations are very important. Let's go through it. Periodic table is arguably the most important concept in chemistry, both in principle and in practice. It is in the everyday support for students. It suggests new avenues of research to professionals, and it provides a succinct organization of the whole of the chemistry. It is a remarkable demonstration of the fact that the chemical elements are not a random cluster of the entities, but instead display trends and lie together in families. An awareness of the periodic table is essential to anyone who wishes to disentangle the world and see
how it is built up from the fundamental building blocks of the chemistry, the chemical elements, right? Students, you must know about the five element concept, which was the previous or the most primitive concept, you can say. People were thinking that each and everything in this universe is made up of five elements, and for them the five elements were Shit, Jal, Pavak, Gagan and Samir, that is soil, water, fire, wind, and sky. Okay, but today we know that 118 elements are there. So, what is the element? It is the simplest form of matter which consists of only one type of atoms. Atom you already have studied in the previous chapter. So, let's start with the classification of elements now. As I told you earlier, many times, means in the earliest sciences, many a times people tried to classify the elements. But the first scientific or reasonable classification, which has got some importance, was given by Mendeleev. Although we have to study some of the history of chemical classification as well, right? Why do we need the classification of element? Because there are 118 classification elements, and you know, in biology, in chemistry, or in any other subject, whenever we are doing the classification, the sole purpose of the classification is to make the study easier. Okay, so for the same purpose, we are doing here as well. Genesis of periodic classification. In class 10th, you people have gone through Drobener triads, right? And Newland's law of octave. So these things I'm not going to repeat. You know, Drobener triads, the elements were in the group of 3, 3, right? And the middle element was having the mass number as the average of the other two. Clear? In the triad. But the problem with the Drobener was he was not able to classify or assemble all the then known elements even in the form of triads. All right. Second was law of octaves, Newland's law of octaves, right? John Alexander Newland in 1865. He suggested that as we are having, you know, sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa, the eighth note of the octave music is repeating. In the very similar way, when we are arranging the elements in the increasing order of their atomic masses, okay, then the eighth element will repeat the properties of the first element. The same problem was with octave also, that he was also not able to classify all the elements or arrange all the elements which were known at that time. Okay, then we come to a new name here. Okay, Lothar Meyer. He worked on the curves. Actually, Lothar Meyer and Mendeleev both are having the some or what, you know, means both were contemporary scientists. Okay, so they both worked on the periodic table at the same time. Just wait a minute, I'm going to show you the Lothar Meyer curves. Not drawn here. All right, in different books you people will be able to see that. Fine. And when we come to Mendeleev in 1969, he was the first to arrange the elements. Perhaps more about 63 elements were there, and he arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. There were problems in the Mendeleev's periodic table as well. Okay, because all the elements were not assembled in the increasing order of their atomic masses. The good thing about the Mendeleev was that he suggested, he accepted that in future even new elements can be discovered. Okay, and that's why he even left the places for elements like uh, Eka aluminium and Eka silicon, the element after aluminium and after silicon, that is gallium and germanium. Okay, as by today's knowledge we know. And the second merit of the Mendeleev's periodic table was
that noble gases, when Mendeleev suggested for the periodic table first time in 1969, at that time we were not having the idea of the noble gases. But later when we come up with the idea of the noble gases, discovery of the noble gases, it was very easy to set the noble gases in the same periodic table. Okay, that was the Mendeleev's periodic table. Fine. After that, Moseley and some other scientists worked very well in this field, and they come up with a new criteria. They found that uh, actually when we were arranging the elements as per the increasing masses, okay, mass number or increasing atomic masses, we were having some problems. What are the problems were there? There were some pairs in which the element with the greater mass was put uh, after the element having the lower mass. For example, you can have the example of potassium and calcium, right? And many other nickel and iron. In this way, many other examples were also there in Mendeleev's periodic table. Then Henry Moseley for the first time suggested that instead of your atomic mass, the atomic number is the characteristic which can, in the order of which we can arrange the elements to get the uh, to arrange them in the periodic properties, right? So the periodic properties of the elements were depending upon the atomic number. And then we will come to see the new and the latest periodic table which we are having which we are having today in your laboratories and in your study tables, the new and the modern periodic table. All right. So this is your modern periodic table, long form of periodic table, right? Let me minimize it so that you can see in one form only. This is your modern periodic table, and I'm damn sure that you all have gone through it. All right. So here we are having, yeah, in the previous chapter, now just it is more than enough about the history. Now we have to study the modern periodic table in detail, and we have to go through the elements and how the properties and periodic trends are there. Fine. In the modern periodic table, the first and foremost thing we are having, we have arranged the elements in the increasing order of their atomic numbers. Okay. Second thing, in the modern periodic table, we are having 18 groups. These vertical columns are called groups. Okay. Vertical columns are called groups. And these horizontal columns are called periods. All right. Understanding? So we are having 18 groups. You can see this number, last number is 18. 18 groups and 7 periods. Understanding? So in the modern form of periodic table, we are having 18 groups and 7 periods. These two are lanthanide series and actinide series. Lanthanide series is the integral part of 6th period. You can see this block is actually having elements from lanthanum to lutetium. Understanding? Lanthanum, cerium, promethium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, then lutetium. Okay, 71. So 57 to 71 are placed at one place only. Why? Because we are not having the, this is the only drawback of today's periodic table, that these lanthanide and actinide series, abhi main aapko bataunga, these are also known as F block elements. Okay, we are not able to give place these elements in the periodic table only. Main body of the periodic table mein hum F block ko, A elements ko place nahi kar pa rahe hain. This is the drawback with the today's periodic table. Okay, although in future there is high possibility that we can come up with a new form of periodic table as the new elements will be discovered, but today we are having this only.
Yeah, now let me tell you something about the blocks. These group, see, in some books you people will also see the classification of the groups on the basis of 1A, 2A, then 3A, 4A, 5A. This is not needed today, okay? In the modern sciences, we are just using 1, 2, 3, all right, up to 18. So 18 groups and 7 periods. Although this 1A, 2A, 3A should be known to you. You know, you must know about this, all right? So इसको एक बार देख लीजिएगा. And the groups 1 and 2, the group numbers 1 and 2, that is lithium, actually hydrogen is also here. Hydrogen का problem अभी भी है. Okay, some scientists are suggesting to place it outside the periodic table because it is having the properties similar to the uh, group 1 elements as well as with the group 17 elements. So hydrogen we will take separately in our new chapter. We are having a complete chapter on hydrogen, right, in your class 11th chemistry. So for time being, let's place, some scientists suggested to place it separately. Some scientists even suggested to place it in the both the places with group 1 as well as with group 17. Okay, so different periodic tables you can come across. In the S block, we are having helium as well. Now I think it will be much better. All right. In the previous chapter, I have told you how to write the electronic configuration, right? When I was teaching you the above principle. So when you will write the electronic configuration for these elements of group 1 as well as group 2, मैं हीलियम को यहाँ पर भी रख रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, ओके? और हाइड्रोजन को आप इस जगह पर भी प्लेस कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, फाइन. सो जब हम इनको ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, so these are, sorry, on the basis of block, these are called S block elements. S block elements. Why? Because when you will write the electronic configuration for these elements, you will find that the last electron is falling in the S orbital. Okay, no matter you are writing for hydrogen, for lithium, for sodium, okay, last element will fall in the S block, S group. For these group number 3 to group number 12, these are D block elements. D block elements. Why? Because the last electron is going to enter into the D orbital. From boron to fluorine family, that is 13, 14, 15, 16. But at this time, you can include 17 as well, but take hydrogen and helium as exception. Okay, hydrogen इस periodic table के according यहाँ पर place नहीं है. Take helium also as an exception. Except hydrogen and helium, all these are P block elements because their last electron will enter into the P orbital. All right, and these are your F block elements because the last electron is entering into the F orbital. Clear? So on the basis of electronic classification, we are having these elements. अभी मैं आपको जूम करके इसे दिखाने वाला हूं, आपको और समझ में आ जाएगा. See the S block. In the first period, all are having outermost classification S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 and 7S1. Okay, in the second period, all these are having the electronic configuration
in which last electron is entering S, but now S orbital is having 2 electrons. So 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2 and 7s2. Clear? This is the outermost valence shell electronic configuration is written here. आपके एलिमेंट्स के साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका लिखा हुआ है. यू पीपल कैन गो थ्रू इट. फॉर स्कैंडियम D1 लास्ट इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 एंड D10. आफ्टर D10 इट इज डन, राइट. और फिर हमारे इलेक्ट्रॉन्स P में जाने लगेंगे. P1, in boron family all are having P1 type electronic configuration. Carbon family all are having P2, 2 electrons in p orbital. Nitrogen all are having 3 electrons in p orbital of the outermost shell. Clear? Oxygen family 4 electrons. Fluorine family 5 electrons. And noble gases all are having P6 except helium. Helium is having just 2 electrons in S. So we can say it is a S block element. All right. And this is their similar, just let me introduce you with the F as well. See, these are having electrons in the F block. Okay, F2, F3, F4, up to F14. Clear? So students, what I was saying that when you will go through these electronic configuration, and the most important part of this chapter, which is relevant for future studies and for what we are studying all these things, is the periodic trends. Okay, is the periodic trends, means how the properties are changing, chemical properties as well as physical properties changing along the period and down the group. So these similar properties, actually all the elements of the same period, so same group, are having similar chemical properties. What is the reason behind this? The reason behind their similar chemical properties is their similar electronic configuration. If you can see group 1, all are having similar electronic configuration, means outermost S 1 electron, right? Similarly with second, third, fourth, this is to be observed. All are having similar electronic configuration in one group. All the elements of the same group are having similar electronic configuration, and because they are having similar electronic configuration, they show similar chemical properties. Okay, because your chemical properties of an element are decided on the basis of their electronic configuration. Let's move forward. Before we discuss the periodic trends in detail, let me introduce you with the electronic configuration. Atomic nomenclature. Okay, for the elements which are having atomic number more than 100. बेटा, what was the need of such nomenclature? तो हो क्या रहा था कि Americans and USSR, today it is not in existence, that is Russian Union, right? Soviet Union जिसे बोलते थे. इनके बीच में कोल्ड वॉर हमेशा से रहा, नॉलेज को लेकर के, साइंस में डिस्कवरीज को लेकर के, और इन ईच एंड एवरी फील्ड, इन इकोनॉमी एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उस समय हो क्या रहा था कि आर्टिफिशियल एलिमेंट्स बन रहे थे. 100 के ऊपर जब हम बना रहे हैं, तो सेम एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल 114, 104, जब एटॉमिक नंबर 104 डिस्कवर हुआ, सो अमेरिकन ने उसका नेम रदरफोर्डियम रख दिया, और सोवियत यूनियन के मेंबर्स ने उसको कुर्चेटोवियम बोल दिया, राइट? सो इस तरीके से अगर सेम एलिमेंट के डिफरेंट नेम्स होने लगेंगे, तो IUPAC के मेंबर्स को लगा इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी, राइट? सो इन्होंने, हालांकि इनको फ्री कर दिया, वॉट एवर यू वॉन्ट टू गिव नेम डू, राइट? बिकॉज वो नेशंस हैं, बड़े यूनियंस हैं, एक इंडिविजुअल उसको चेंज नहीं कर सकता, राइट? सो एक
जो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होनी चाहिए साइंसेस में, वो कहीं ना कहीं लैक कर रही थी। और उस यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने बोला कि फॉर एटॉमिक नंबर अबव 100 वी विल हैव दिस क्लासिफिकेशन, राइट। और इसकी हेल्प से आज जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं उनका भी नेम आप रख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल 119 डिस्कवर होने वाला है, आप उसका नेम अभी रख लीजिए अन इनियम, राइट। कैसे, अभी बताते हैं। सबसे पहले तो डिजिट्स एटॉमिक नंबर के बेसिस पे रखेंगे, तो आपको डिजिट के लिए ये एब्रीविएशन जिससे आप सिंबल बना सकें और नेम आपको लर्न कर लेना है। फॉर 0 वी आर हैविंग निल, symbol is M. For 1 we are having un, symbol is U. For 2 we are having bi, symbol is B. For 3 we are having tri, symbol is T. For 4 we are having quad, symbol is Q. For 5 we are having pent, symbol is P. For 6 we are having hex, symbol is H. For 7 we are having sept, symbol is S. For 8 we are having oct, symbol is O. For 9 we are having N, symbol is E. Understood? Any problem here? All right. So just keep this thing in your brain and let me move on. Now just with the help of number, you have to write the name. Atomic number 101. For 1, what was the name? Un. For 0, it is nil. Nil. For 1 again it is un. And last में आपको em लगा देना है. Clear? So un nil anium 101. Un nil bium. दिख रहा है? Un nil trium. Understanding? Un nil quadium. Un nil pentium. Un nil hexium. Un nil septium. Un nil octium. And un nil inium. बात समझ में आ रही है सभी को? सिंबल समझ में आ रहे हैं? सो इट इज वेरी इजी. 110 un nil, sorry, un, it must be un. ये मिसप्रिंट है बेटा, इसको अन कर लीजिए. अन निलियम. ऑलराइट. 2 बार 1 है, सो अन देन अगेन अन निलियम. अन अनियम. अन बाइयम. अन ट्राइयम. अन क्वाडियम. पेंटियम. हेक्सियम. सेप्टियम. ओके. अनन ट्राइयम, अनन क्वाडियम, अनन पेंटियम, अनन हेक्सियम, अनन सेप्टियम, अनन ऑक्टियम. क्लियर? सिंबल सारे समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? दिस इज इट अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100. Electronic configurations of the elements and the periodic table. Just now I have explained you with the help of a periodic table that how on the basis of electronic configuration we have classified the elements. Okay, the elements in the same group, for example, this is your first group: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. Hydrogen also you can put, so that will have 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1 and 6s1, right? Don't forget to include hydrogen here above lithium, okay? And that is having 1s1. All right. All these have the tendency to form positive ions because electronic configuration is similar and having outermost shell में 1 electron. Now electronic configuration and type of elements on the basis of sp and df blocks. This also I have explained you. समझ में आ रहा है? S block, if the outermost element is going into the s orbital, वहां पर आपके पास सिर्फ
आपका पीरियोडिक टेबल का जनरल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से है। 1 and 2 ये दोनों आपके एस ब्लॉक हैं। ओके, फ्रॉम 13 to 18 all these are P block elements. All right, these third to 12 are your D block elements, and this lanthanide series and actinide series are F block elements. Clear? Because इनका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही एक एक्सरसाइज दे रखी है 1 to 118 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने की इन द प्रीवियस चैप्टर। सो वहां से आपको पता चलेगा दैट दीज एलिमेंट्स आर हैविंग means their outermost electron is falling in this particular group, right? exceptions exist करेंगे। एक्टिनाइड में पहला मेंबर जो आएगा आपका थोरियम, एटॉमिक नंबर 90, राइट? वहां पर एफ ब्लॉक में एक भी एलिमेंट नहीं है, डी में 2 चले गए हैं, ओके, बट फॉर द ईज हम लोग वहां पर लिख रहे हैं, राइट? थोरियम इसका एक्सेप्शन है, और दूसरा आपका हीलियम जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है नोबल गैस के टॉप पर, वो आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, मगर हमने वहां रखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? Again you can see this is your S block, D block, P block and F block. Clear? Understood? Fine. एस ब्लॉक में बेटा जो आपके फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, दे आर हैविंग अ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1। ओके, आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। एंड जो सेकेंड ग्रुप है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2, N में भी एनी नंबर, राइट? सो फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट्स +1 आयंस बनाएंगे, दोज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ओके, your lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, strontium, sorry, not strontium, right? Hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, and cesium, right? CS. These all will form +1 valency. These all will show +1 valency, and they will form +1 ions. In the very similar way, alkaline earth metals, let me explain you here only. These are your alkali metals. Alkali metals, okay. Group B elements, group 2 elements are called alkaline earth metals. Alkaline earth metals, they all will show +2 valency state, sorry, चार्ज इनके आयंस में +2 होगा, बिकॉज दे आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी के लिए हम प्लस या माइनस नहीं बोलते हैं, वैलेंसी ये 2 का शो करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, राइट?
These are your D block elements, also called transition elements. Transition elements. Why term transition is used? Because they are just helping you in transition from metal to the non-metals. Okay, in P block mainly you will see the non-metals, although all are not non-metals over there. This 13th group, all are having electronic configuration NS2. D का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने जनरल नहीं बताया, लेट मी टेल यू. NS2, N-1, D, 1 to 10, राइट. मैं N-1 क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज यू नो पहले 4s आता है बेटा अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, फिर हम 3D लिखते हैं. पहले 5s आएगा फिर 4D. अंडरस्टूड? पहले 6s आएगा फिर 5D, सॉरी 6D. क्लियर हो रहा है? सॉरी. Then 13th group, general electronic configuration NS2 P1. ओके. 14th के लिए P2 हो जाएगा, 15th P3, P4, P5 एंड हेलोजेंस के लिए P6, सॉरी नोबल गैसेस के लिए P6. सो 1 to 6. ऑलराइट, जनरल पूरा P ब्लॉक के लिए है ये. बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली. Fluorine family is also well known as halogen family. Okay, halogens because they help in the formation of salt. And this helium आपका P block का exception है, बाकी including helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, all these are noble gases. Okay, then we come to F block elements. These are also called inner transition elements. Okay, क्योंकि मैंने आपको D ब्लॉक बताया, D ट्रांजिशन है. ओके, और ये ट्रांजिशन के अंदर से ही तो निकले हैं, मतलब लैंथेनम, ये जो पोजीशन है यहीं पर हम लैंथेनम से लेकर के ल्यूटेटियम तक के सारी पोजीशंस मानते हैं. सो विद इन द ट्रांजिशन एलिमेंट दीज आर प्लेस्ड, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ओके, बात समझ में आ रही है? और क्योंकि ये लैंथेनाइड से शुरू हो रहा है, सो दीज आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स. और यहाँ पर फर्स्ट आपका एक्टिनाइड है, दैट्स व्हाई सेकंड लाइन, सेकंड सीरीज इज कॉल्ड एक्टिनॉइड्स. ऑलराइट, बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. फाइन. See this example. Atomic number 117 and 120 have not been discovered. एक्चुअली बेटा ये जब क्वेश्चन बना था तब 117 नहीं आया था, अभी आ चुका है. ठीक है, सो आप मान लीजिए कि अभी नहीं डिस्कवर हुआ, 120 तो नहीं डिस्कवर हुआ है. इन विच फैमिली ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स? या अभी आपके अंदर ये एबिलिटी डेवलप हो जाना चाहिए कि आप किस ग्रुप में, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना आता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख करके उसकी हेल्प से आप एलिमेंट्स का ग्रुप पता कर सकें, पीरियड पता कर सकें, और ग्रुप एंड पीरियड पता हो जाएगा तो फिर आप उसको सही पोजीशन पे रख पाओगे. राइट, इन केस वो F या D ब्लॉक का है, F ब्लॉक का है तो F ब्लॉक में कहां पर जा रहा है, किस पोजीशन पर है, वो आपको बताना होगा. सारी बात समझ में? F ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं, अगर लैंथेनाइड सीरीज के हैं तो उनके लिए आप ग्रुप लिखेंगे थर्ड, क्योंकि वो थर्ड ग्रुप के अंदर से ही निकले हैं. ऑलराइट, आ रही है बात समझ में? और जितने भी एक्टिनॉइड हैं वो भी थर्ड के हैं. फाइन. लैंथेनाइड सीरीज के लिए पीरियड लिखना है तो 6th, एंड एक्टिनाइड के लिए पीरियड 7th. मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? फाइन.
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आसानी से देखने को मिलेंगे. नाउ व्हेन वी कम टू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स. मेटल्स ब्रॉडली स्पीकिंग जो आसानी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, नॉन मेटल्स जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स रिसीव कर लें, और मेटलॉइड्स थोड़ा सा इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी रखते हो. ओके, in detail we will see it, but before that I want to tell you some trends in physical properties. जैसे जैसे हम लोग ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे आपको मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे. ऑलराइट, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स. सो ट्रेंड्स इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी हो सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी में भी हो सकते हैं. हम ये देखेंगे कि अलोंग अ पीरियड वहां पर क्या चेंज आ रहा है और डाउन द ग्रुप वहां पर क्या चेंज आ रहा है. हमें ट्रेंड याद रखने हैं, इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं याद रखनी है. इंडिविजुअल वैल्यूज जितनी याद रखनी है वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा. ईच एंड एवरीथिंग कैन नॉट बी लर्न एंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी लर्न. ऑलराइट, so first of all let's discuss about the atomic radius. Yeah, atomic radius. we know हमारा जो एटम है वो इन जनरल 10 with the power minus 15 के ऑर्डर में होता है, राइट. सॉरी, न्यूक्लियस 10 with the power minus wait a minute, yes, एटम इज, एटम का रेडियस 10 with the power minus 10 के रिस्पेक्ट में है, 10 के ऑर्डर में है, और जो न्यूक्लियस है वो 10 with the power minus 15 के ऑर्डर में होता है, फर्दर बहुत छोटा, राइट. तो अभी हम एटम की बात कर रहे हैं, लगभग 10 with the power minus 10 के ऑर्डर में निकलेगा एटम का रेडियस. बट when we are moving along a period, okay, atomic radii will, what will happen to atomic radii? Just let your brains do some work. जब आप along a period जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है, और उस कंडीशन में एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज, राइट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सराउंडिंग ऑर्बिटल्स ज्यादा हो जाएगा और वो ज्यादा करीब आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, एटॉमिक रेडियस है क्या? द डिस्टेंस और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग. ऑलराइट, समझ में आ रही है बात? सो दिस इज योर atomic radii, and atomic radii decreases along a period while it increases down the group. जब आप down the group जाओगे तो atomic radius increase होगा. क्यों increase होगा? क्योंकि अभी नीचे जाते समय number of shells बढ़ रहा है, number of orbits बढ़ रहा है. Okay, for example helium, sorry, hydrogen, lithium, sodium. Hydrogen is having just one orbital ऑर्बिट, लिथियम 2 एंड सोडियम 3. सो यहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1s में है, इसका 2s में है और इसका 3s में है. डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसलिए साइज इंक्रीज होगा व्हेन वी विल मूव डाउन द ग्रुप, एंड अलोंग अ पीरियड साइज विल नॉट चेंज. आई एम सॉरी, अलोंग अ पीरियड साइज विल डिक्रीज. There are concepts of covalent radius if atom is, although all will follow the same trend, okay, but differences हैं. atomic radius आप individual atom के केस में बोल देते हैं. when you are having the covalent radii, then two covalently bonded atoms के बीच का distance का आप half कर लेते हैं. for example आपके पास हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, नेचर में हमें हाइड्रोजन का एक एटम तो मिलेगा नहीं, नॉर्मली हमें H2 मिलेगा. सो H2 के दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है लेट इट बी L, तो हम इसका हाफ कर दें L/2 टू गेट द कोवैलेंट रेडियस. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. आयनिक रेडियस, अगर उन्होंने आयन फॉर्म कर रखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आयनिक रेडियस के केस में अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो एटॉमिक रेडियस से छोटा हो जाएगा रेडियस, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एटॉमिक रेडियस से बड़ा हो जाएगा रेडियस, राइट. बिकॉज नेगेटिव चार्ज का मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही प्रोटॉन पर, उतने ही बड़े न्यूक्लियस पर, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर साइज बड़ा हो जाता है. आ रही है बात समझ में?
there are some values radii of different atom given in picometer. आपको यहां से सिर्फ ट्रेंड देखना है कि हाँ ये डिक्रीज हो रहा है, दैट इज इट. ओके, लिथियम, देन बेरिलियम, देन बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन. मैंने आपको बोला कि अलॉन्ग द पीरियड आप जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, आपको दिख रहा है डिक्रीज होता हुआ. ध्यान रखिए बेटा, नोबल गैसेस इसके एक्सेप्शन हो जाएंगे, ठीक है. ओके, क्योंकि वहां पर जैसे ही आपने मान लीजिए फ्लोरीन के बाद नियॉन लिख लिया, so it will have atomic radius bigger than fluorine. okay, why? अभी तक क्या हो रहा था, लगातार डिक्रीज हो रहा है, और फ्लोरीन के बाद अचानक से इंक्रीज हो रहा है. रीजन क्या है? रीजन ये है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन्स एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर चुके हैं. ओके, तो वो आपस में काफी फोर्सेस को कैंसिल कर लेंगे. क्लियर? एटॉमिक रेडियस फाइन. पीरियड थर्ड का भी दिया हुआ है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. यहां पर भी आप देख सकते हैं सेम ट्रेंड है. कुछ माइन्यूट से एक्सेप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे यहां पर फास्फोरस से सल्फर में आप देखिए, सॉरी कोई एक्सेप्शन नहीं है, फास्फोरस टू सल्फर डिक्रीज ही हो रहा है. ऑलराइट, बट आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे. फास्फोरस और सल्फर में एक्सेप्शन नहीं है, डी ब्लॉक में आपको एक्सेप्शंस मिल सकते हैं कभी, ठीक है. सो दैट इज एक्सेप्टेबल, और उनको हम सेपरेटली जब उस ग्रुप की स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पर पढ़ लेंगे. डाउन द ग्रुप आप देख रहे हैं लगातार साइज इंक्रीज हो रहा है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीजियम 152, 186, 231, 244 एंड 262. कंटिन्यूअस इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको. ऑलराइट, ये ग्राफ्स हैं, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड मच, बट आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर पे बना हुआ है, और ये वाला आपका एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर पे बना हुआ है. In this case, only elements of one lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, elements of one period are taken, and here elements of one group are taken, right? Lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, ये एक group हो गया, and fluorine, chlorine, bromine, iodine, second group. Understood? Ionic radius, I have already told you, कैटायन बन रहा है तो एटॉमिक रेडियस से छोटा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ओके, एंड एनायनिक रेडियस है तो आपका इंक्रीज हो जाएगा साइज एनायन के केस में एटम के कंपैरिजन में. व्हेन वी फाइंड सम एटम्स ऑफ आयंस व्हिच contain the same number of electron, we call them isoelectric species. I have introduced you with the isoelectric species. For example, O2, F minus, Na plus and Mg2 plus. They have same number of electron. Their radii would be different. इनके radius different होंगे. Why? और वो same उसी trend में होंगे जैसे इनका एटॉमिक रेडियस चेंज हो रहा था, राइट? ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज ऑन द एटम तो सेम है, बट न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है. न्यूक्लियर चार्ज मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि वही आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट है. बात समझ में आ रहा है? ऑल राइट, this was about the atomic radius, and then we have seen the ionic radii. ये एक क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग 3.5. Which of the following species will have the largest and the smallest size? Mg, Mg2 plus, Al, Al3 plus. Smallest size किसका होगा? Al3 plus. Okay, because वहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है. फाइन. एंड जो आपका स्मॉल लार्जेस्ट साइज है वो मैग्नीशियम का होगा. वाई? बिकॉज मैग्नीशियम और एल्युमिनियम सेम पीरियड में है, और मैग्नीशियम एल्युमिनियम से पहले आ रहा है. क्लियर? एनी डाउट?
So magnesium is the largest and aluminium is smallest. Annihilation enthalpy. What is annihilation enthalpy? The amount of energy required to remove outermost electron from the neutral gaseous atom. Beta, when I am saying न्यूट्रल गैसियस एटम, इट मींस एटम के ऊपर किसी भी तरीके का चार्ज नहीं होना चाहिए और वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए. So students, you yourself have to go through inertia enthalpy and further trends. In the next lecture, we will discuss the details about the inertia enthalpy, electron negativity, electron gain enthalpy, etc. and etc. All right. Thank you, class. Keep learning, keep watching the videos, keep studying, stay safe and stay healthy.